नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। सो दिस इज आवर पार्ट 6 जिसमें कि हम लोग द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड बाय रोनाल्ड कार्टर एंड जॉन मैकक्लेड की जो बुक है हम लोग उसको कवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। इस बुक को हम लोगों ने काफ़ी टॉपर्स के मुंह से सुना है या जेआरएफ क्वालिफायर्स के मुंह से सुना है कि ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर योर प्रिपरेशंस लाइक सीयूईटी, सेट, डी ट्रिपल एस बी, गेट, नेट, जेआरएफ एक्सेट्रा। सो मैंने इस बुक की जो सीरीज है वो 1 to 25 कंप्लीट करा रखी है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा अब तक तो जाकर देख लो, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस पे आते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है द टॉपिक है हमारा द 20th सेंचुरी 1945 टू द प्रेजेंट। हम लोगों ने 19th सेंचुरी तक कवर कर लिया है, अब हम लोग 20th एंड 21st सेंचुरी पे आएंगे। ठीक है, तो हमारा ये 20th सेंचुरी है। सो इसके जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द एटॉमिक एज। सो दिस इज द ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा, ओके, एंड नागासाकी। Next, which term describes the division of the world into communist and non-communist bloc? So the correct answer is Iron Curtain. Next, who devoted much of his post-war time to writing a 6-volume history of the Second World War? So his name is Winston Churchill. Okay, next. Which decade is described as the age of youth? So it is 1960s. Okay, next. Which literary term is widely used to describe attitudes and creative production following the Second World War? So postmodernism. ठीक है? According to A.S. Byatt, what is common theme underlying much of modern writing? So the end of certainty. Next. Which Nobel Prize winning poet is mentioned as having a secured place in Irish poetry after Yeats? So his name is Seamus Honey. What does the term literature in English reflect? So the changing inflections in writing in the English language worldwide. Next, drama since 1960s. Sorry, 1945. I'm so sorry. Drama since 1945 is the next subtopic here. So the first question of this topic is which of the following playwright is associated with the line nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. मैं आप लोग को बता दूं कि ये लाइन काफी ज्यादा रिपीट हो चुकी है हमारे एग्जाम्स में, सीयूईटी में भी आई थी आई गेस एंड नेट में भी आई है, सेट के एग्जाम में भी मैंने इस लाइन को देखा है। सो दिस लाइन इज बाय हमारे सैमुअल बेकेट इन हिज प्ले वेटिंग फॉर गोदो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, एक एब्सर्ड प्ले है जिसके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा, इसके कैरेक्टर्स आप लोगों को देखने होंगे एंड यस आप लोगों को साथ ही साथ थीम एंड पब्लिशिंग डेट वो करनी होगी। नेक्स्ट, which era of drama was characterized by well-made plays in standard English for middle class audience until the 1950s? So pre-1950s. Next, who among the following brought dialect and lower class accents into theatre, helping transition to a more working class voice in post Second World War drama? So the name are Shaw, Lawrence, Sinch, Sinozhazy. ठीक है? Next, what is the language style of plays by Beckett, Obstron, Pinter and Orton in the 1950s and 60s? So हमारा right answer है colloquial and slangy. ठीक है, colloquial and slangy language को use करते थे
ठीक है, कौन? ये बेकेट, ऑप्शन पिंटर और ऑर्टन अपने प्लेस में। ठीक है, नेक्स्ट, द पोएटिक ड्रामा ऑफ टी.एस. एलियट एंड क्रिस्टोफर फ्राई often dealt with issues of सो ग्रेट मोरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। आप लोगों ने टी.एस. एलियट और क्रिस्टोफर फ्राई का अगर वर्क्स आप लोगों ने देखा होगा तो जनरली वो हमारे ग्रेट मोरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के ऊपर लिखते थे। अगर आप टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड पढ़ लो, जरॉन्शियन पढ़ लो, या फिर आप लोग कॉकटेल पार्टी पढ़ लो, तो फिर आप लोगों को उसमें रिलीजियस का कुछ ना कुछ आप लोग को सिग्निफिकेंस देखने को ही मिलेगा। वैसे ही हमारे क्रिस्टोफर फ्राई का बहुत सारे प्लेस है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग। ठीक है, तो ये सारे प्लेस जो है इन लोगों के ग्रेट मोरल आइडियाज पे बेस्ड होते थे और कहीं ना कहीं आपको रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखने को मिलती थी। In T.S. Eliot Cocktail Party, what characterizes the dialogue? So, iambic rhythmic movement and engagement with ideas. So, this is not so much important, but मैंने आप लोगों को जस्ट एक आइडिया देने के लिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है कि उसमें कैसा जो है वो डायलॉग कैसा था। तो आयम्बिक रिदमिक मूवमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा और बहुत सारे आइडियाज। ठीक है, which of the following best describes the language used in Samuel Beckett Waiting for Godot? So ordinary and everyday. ठीक है, which statement best describes the dialogue style in the plays of Beckett and Pinter? So lacking in coherence and filled with gaps. Which playwright works were heavily criticized for catering to a mindless average audience symbolized by Aunt Edna? So the correct answer is Terence Rattigan, who is considered the most significant figure in the angry young man movement in British drama in 1950s. So as you all know, John Opson is the one. ठीक है, which play by John is seen as a testament of a new generation and heralded a new spirit in drama? So look back in anger. ठीक है, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले है और बहुत बार एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बने हैं इस प्ले के ऊपर। अगर आप मैच द फॉलोइंग कह लो, या अगर आप लोग कह लो कि वैसे वाले क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्ले इनका नहीं है, तो वैसे वाले क्वेश्चंस में आपको जॉन ऑप्शन का ये प्ले है, ये बहुत देखने को मिलेगा। Which term was initially used to describe the plays of Samuel Beckett and Harold Pinter, although it has since been reconsidered by critique? So, theatre of the absurd. थिएटर ऑफ द absurd को मैंने कवर करा रखा है अपनी एच अब्राहम्स की सीरीज पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी और इसमें भी दे दूंगी। तो प्लीज जाके आप लोग एक बार उसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि एच अब्राहम्स की जो बुक है, हमारे एच अब्राहम्स की जो बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is a theme commonly found in Samuel Beckett's play? सो सॉलिट्यूड एंड होपलेसनेस। सैमुअल बेकेट के प्ले में हमें सॉलिट्यूड एंड होपलेसनेस का जो थीम है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एज यू ऑल नो ये जो वॉर हुई थी उसके बाद से जो लोगों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, जो रिलीजियस जो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज में, वो भगवान के ऊपर से या कह लो वो चीज विश्वास उठने लगा था, ह्यूमंस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। सो इसी सब की वजह से अब लोग जो है वो खुद को तन्हा पाने लगे थे। ठीक है, अब लोगों की जो थीम थी वो, सॉरी, सैमुअल बेकेट की जो थीम थी वो इसी चीज के ऊपर थी। ठीक है, सो सॉलिट्यूड, तन्हाई एंड होपलेसनेस। ठीक है, नेक्स्ट, इन बेकेट्स वेटिंग फॉर गोदो, what do the characters Valdemir and Estragon spend their time doing? So Valdemir here and Estragon here, these two are the most important characters in this play Waiting for Godot, and इन दोनों कैरेक्टर से आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वेटिंग फॉर गोडोट इटसेल्फ। ओके,
देखो, ये जो दोनों जो कैरेक्टर्स, ये गोदो नाम के एक इंसान का वेट कर रहे हैं जो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, रोज आते हैं, रोज वेट करते हैं, रोज आते हैं, रोज वेट करते हैं, बट ये कभी पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कहानी इसी से शुरू होती है, इसी पे खत्म हो जाती है। Which play by Harold Pinter features characters Gus and Ben, whose situation is increasingly threatened by the machinery of the title. So the dumb waiter. Okay, next. What is the central focus of Harold Pinter's play Silence? So this play was published in 1969 and the central focus of this play was characters rehearsing interlinked memories with directly relating to each other. ठीक है? Next. What type of plays emerged in the late 1950s known for their lower class domestic realism? So kitchen sink drama. Okay? Next. Which of the following is a characteristic of the play by Beckett and Pinter? So minimalistic setting and dialogue. Next. Which play by Terence Rattigan is noted for its portrayal of solitude, injustice, and quiet desperation? So this is the Browning version. Next. John Ofston play Look Back in Anger is associated with which theatrical movement? So as I have told you earlier, the right answer will be angry young man. Okay, next. Which play by Arnold Wesker is known for its lower class domestic realism and title reflecting a common domestic setting? So the kitchen is the right answer here. Next. Samuel Beckett's Waiting for Godot primarily explores which existential theme? So the absurdity of existence. Next. Harold Pinter's The Caretaker. What is the key element of the play's dramatic tension? So the menace in the silence between characters. Next. Joy Orton Loot is best described as a black comedy. Black comedy के बारे में भी मैंने आपको अपनी एमएच अब्राहम्स वाली प्लेलिस्ट में समझाया है, तो प्लीज आप लोग एक बार जाके उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्लेलिस्ट. Tom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern are dead reimagines character from which Shakespeare play? So Hamlet में ये दोनों बंदे रहते हैं. अब इन दोनों बंदे के ऊपर इस इंसान ने ये वाला प्ले लिखा है, रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डरस्टन आर डेड. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट थीम इज सेंट्रल टू एडवर्ड बॉन्ड प्ले सेव्ड? So social and political critique is the right answer here. Next, David Hare's Skylight deals with conflicts between business ethics and personal morality. Next, Peter Shaffer play Mcqs is primarily concerned with which theme? So psychological drama is the right answer here. Next, which Carl Churchill play explores the ambivalence behind the British Empire with a fascinating time shift? So Cloud 9 is the right answer here. Next, The Love of Nightingale by Timberlake is based on which mythology? So Greek. Which playwright is known for monodrama series Talking Heads? Alan Bennett is the right answer here. Next, The Singing Detective, a highly regarded television series, was created by Dennis Porter. Next, in which play David Hare explored the relationship between the church and the state? So Racing Demon. Next, Howard Brenton's The Roman in Britain controversially parallels the Roman occupation with which contemporary issue? The Troubles in Northern Ireland. Next, Timberlake Burton Baker Our Country's Good incorporates which classic play into its modern plot? The Recruiting Officer. Poetry of the Second World War.
Which poem by T.S. Eliot mentioned as reflecting the concern of the immediate post-war era? So 4 quartets, ठीक है, ये 4 quartets का एक लाइन है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप लोग प्लीज इसको देख लेना एक बार. Which poet's work is often seen as giving a label to second half of the 20th century? So W.H. Auden is the right answer here. Next. Which poet is noted for the poem Naming of Parts? So Henry Reed. Next. Which of the following poet was not killed in the Second World War? W.H. Auden. Next. Which work is identified as John Benjamin Ward's autobiography? So Summoned by Bells is the right answer. ठीक है, next. The movement aimed to rid poetry of high-flown romanticism. Which poet is most associated with this group? Philip Larkin. Next. Who succeeded John Benjamin as poet laureate in 1985? Ted Hughes. He is the husband of Sylvia Plath. ठीक है, next. In Ted Hughes' poem Hawk Roosting, what does hawk symbolizes? Power and dominance. Next. Which poem Shimash Honey establishes a recurring metaphor related to his personal and cultural history? So digging. Which poet work is characterized by his emphasis on the pitiless and violent forces of nature? So Ted Hughes. Next. In his essay Yeats as an example, Seamus Honey praises which of the Yeats' last poem? So the Shushu Lane Comforted. I don't know what's the correct pronunciation, but you can check it on Google. ठीक है? Charles Tomlinson works The Way of the World and The Shaft are directed examinations of which themes? So continuity and change. Next. Geoffrey Hill's American Hymns celebrated which historical figure? So Offa. Which poet is known for their experimental concrete poetry and acute observation of Glasgow? So Edwin Morgan is the correct answer here. Option number B. Next. What is a significant theme in Seamus Honey volume The Spirit Level? So universal healing is the right answer. Next. Which poet elegies deals with the emotional range displayed after death of his wife? So Douglas Dunn. Next. In Seamus Honey essay Englands of the Mind, he contrasts Geoffrey Hill's landscape with which other poet's cityscapes? Philip Larkin. Next. Which poet collected poems show a wide span of reference and a concern with the fallen nature of man? C.H. Season. Next. In an orphan letter, Seamus Honey rejected the label British and asserts the identity of the nationality in his writing. So Irish. Next. Which poet is described as having a pagan sensibility and is often contrasted with Philip Larkin's urban concern? Ted Hughes. Next. Maritons and Gorgons. So Craig Rain Martin School of Poetry is characterized by defamiliarizing everyday perceptions. Next. In Craig Rain's poem, a Mariton said, a postcard home. The toilet is described as a punishment too. ठीक है? Tony Harrison poem V was written during which historical event? So the miners strike of the mid 1980s. So ये बहुत important question बन सकता है. Please make a notes on that. Okay. Next. Which poet is known for using colloquial form, natural speech, and local dialect in their poetry? So Tony Harrison is the right answer here. Next. In The Gaze of the Gorgon, Tony Harrison addressed which historical conflict? So the Gulf War.
The poem Not Waving But Drowning was written by which poet? So the correct answer is Steve Smith. Okay, next. Andrew Motion quotes Steve Smith in which of his poems? So he quoted him in his poem named Close. Right, next. Basil Bunting's autobiographical poem Brig Flats is set in which country? So the correct answer is Northumberland. Next. R.S. Thomas is best known for his poetry that reflects the landscape and history of which region? So Wales. ठीक है, next. Towards the 21st century. अब थोड़ा 21st century के बारे में देख लें हम. तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है which poet is associated with Martian School of Poetry? So Craig Rain. Next. Simon Artimage's poem Xanadu is set in which location? So Lancashire. Which poet's work includes the collection Zoom and Kid? Simon Armitage. What is a notable theme in Benjamin Zephaniah's poetry? So social and racial concern is the correct answer here. Next. Which of the following works is a film poem by Simon Armitage? So Xanadu, I have told you earlier. Next. Which poet is known for bringing new rhythms and performance styles to British poetry? So Benjamin Zephaniah. Ben Okri's Booker-winning novel is titled The Famished Road. Next. Which poet reflected on social deprivation using 26 alphabetical named blocks of flats in their poem? Simon Armitage. In Benjamin's poem, as a African, he described himself as so both A and B, a miner in Wales and a peace-loving hippie. So यहाँ पे हमारी जो स्लाइड्स है वो खत्म होती है. आज हमारा पार्ट 26 कंप्लीट हुआ है. कल मैं कोशिश करूंगी इस राउटलेज की बुक को पूरा खत्म करा दूं, क्योंकि अब ज्यादा पेजेस उसमें बचे नहीं है. हार्डली मुझे 1 से 2 दिन और लगेंगे और ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. एंड हाँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. एंड कोई भी गलती हो तो मुझे माफ भी करना. कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.